Namaste everyone. Hope you all can hear me well. Atma Namaste. If you can type in chat, there is a little lag, so I'm working on it. But if you can confirm in YouTube chat that you can hear me, आप लोग मुझे सुन सकते, that will be helpful. Is a volume okay? Some of you are saying that volume is not good. If you can type in chat, sound clear, that will be helpful. Okay, thank you. Great. I will increase the volume of my mic a little bit. Just okay. Okay, so how are you all? कैसे आप लोग? I hope all of you had dinner. Those who are from India. We have now, I guess, around 333 people watching right now. Many more to join. So I'll wait for another few minutes and then we will start. Thank you so much. Thank you for all the messages. Thank you. So if you can type in chat, meanwhile, by the time other people come from where you are, the city, आप कौन से शहर किस शहर से, so that will be helpful. Thank you. Or you may add state also along with that. Okay, Manisha from Mauritius. Okay, we have people from Raipur, Hyderabad, Pune, Mumbai, Jaipur. Those who are saying can't hear, I would recommend just look at the sound setting. I would recommend use earphone, because most of you are able to hear. Only one or two people are not able to hear, so maybe it's a local issue. Because I'm using a proper mic, so I'm sure the voice quality is also better. Okay, so now we have people from just Mumbai, Uttarakhand, Goa, Pune again, Aurangabad, Baramati, Nasik, Kolhapur, Hyderabad, Fulton, Goa again, Chhattisgarh, Bengaluru, Kolhapur, Nagpur, Nasik, Ashwini from Italy, Gibraltar, Mumbai, Andhra Pradesh, Bengaluru. Nice. Thank you everyone for the effort and taking out time for this session. So we have people from Kerala. Great. Thank you, Vina. So sound is loud and clear. That is good. Orissa. We are from Beed, Lucknow. Amrita from Pune. We have people from Wardha, Hyderabad, Sangli, Ratnagiri, Chennai, Jamshedpur, Kolkata, and so on. Great. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for joining in time. You all joined before time almost, so that is good. Thank you so much. Atma Namaste from Mexico. Then New Mumbai, sorry. Bengaluru, Jamshedpur. Great. Good. So thank you again. So let's start. I guess we can start now. So already 9:05, so we can start. Light will not be, I guess, that great. You might not be seeing very much clearly to me because the light is an issue today, but I guess it's manageable. So we will start with our prayer. So I'll share my screen.
Okay, nice. And so just need music. Stop. Okay. Okay. So if you can confirm if screen is visible properly and I'm also visible, that will be helpful. I'm waiting for feedback. Okay, great. So I was planning for something else, some other way of going live, but I had to share this presentation. So again, I had to use Zoom, and then from Zoom, we are going live on YouTube. Okay. But what we will do is in future there'll be better. So I guess you're not able to see me clearly. I'll be very small window. But let's see. I don't think I will be able to make it bigger. But still, if it works, both are visible. Okay. I guess it's good enough. You can see the presentation. In between, I will turn off the presentation. Okay. So let's start. So we'll do quick prayer before we start our session. Okay. So close your eyes. Be aware of your crown out top of the head. And repeat after me mentally. Lord God, we humbly invoke for your divine guidance, divine protection, and divine help. We humbly invoke for the blessings of good health, happiness, spirituality, abundance, and prosperity. We humbly invoke for the clarity of our mind. Thank you for helping us and blessing us with the spiritual growth. Thank you in full faith. Take a long deep breath. Hold and exhale. Okay. So welcome again. So today's topic, जो आज का topic है, that is importance and the preparation of the three major full moons. Okay, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. So out of these three full moons, one is very very special. तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. So three major full moons. Okay. अब इन्हें festival भी कहा जाता है. These three full moons are also known as festival. Not just full moon but a festival. Now why? 12 जो full moon होते हैं साल में, उसमें ये जो तीन है ये बहुत बड़े होते हैं. सो मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड मेडिटेट करते हैं इन दोनों इन पर्टिकुलर टाइम पर. दैट्स वाई इसे फेस्टिवल कहा जाता है. जैसे हम लोग फेस्टिवल होता है इन एवरी कल्चर वी हैव फेस्टिवल्स, राइट? सो वी सेलिब्रेट. सो दिस थ्री फुल मून्स आर दो सेलिब्रेशंस. So that's why, so celebration जब भी कहते हैं हम लोग, तो for example you may meditate in at your own alone. आप खुद होके अपने घर पे meditate कर सकते हो. But if you call it a festival, then it has to be in the group, right? जैसे हमारे families में we have festivals, so we celebrate in the group. If you're alone at home and having during any certain festival, then it's not actually a festival or celebration, right? Because you're alone. So normally whenever the word festival is used, it means it has to be done in the group mainly. Okay. So the three major festivals, हम festivals कहेंगे in this session. Now you announced ये जो session हमने announce किया था as a three major full moons because that is very easy to understand. बहुत लोगों को समझने में आसानी होती है. But actually these are three major festivals. Now, तीन major festivals कौन से हैं? To start with the basic thing. The names. Okay, so क्या festivals है, इनके नाम क्या और कब होते हैं? Okay, so पहला है full moon of Aries. तो जो पहला full moon होता है साइकिल का, जो हमारा जब जैसे बहुत सारे कल्चर में this year we celebrated, last month we celebrated a new year, right? In India and different cultures, right? And globally in different cultures they celebrate, whoever follows the moon cycle, they celebrate it as a new year, right? So once the new year starts, like in Maharashtra and India, we have Gudi Padwa, right? So we are starting a new year. So this is the first full moon.
So these are the first 3 full moons of the new cycle. जो नया साइकिल शुरू हो रहा है उसमें पहले 3 full moons है. फर्स्ट इज फुल मून ऑफ एरीज, इसे ईस्टर फेस्टिवल कहा जाता है. देन like if in this month many people are actually the Christian community is celebrating Easter, right? Then the second full moon is known as the full moon of Taurus, okay, और इसे वैसाख फेस्टिवल कहा जाता है, okay? और जो तीसरा मेजर फुल मून होता है विच विल बी थर्ड इन द मंथ ऑफ जून. सो जून का जो फुल मून आएगा दैट विल बी फुल मून ऑफ जेमिनी और जेमिनाई. इसे फेस्टिवल ऑफ गुडविल कहा जाता है. सो दीज आर द 3 मेन फेस्टिवल जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक वन बाय वन अबाउट ऑल द 3 full moons. नाउ मैं तीनों फुल मून्स के बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा and later on we will be spending maximum time on understanding the main full moon, that is full moon of Taurus, that is Vesak. What is Vesak? Why we celebrate it? Among these 3 also the Vesak is the most important one. But as we say these are festivals, तो हमें हर तीनों full moon पे meditation करना ही चाहिए. Okay? क्यों करना चाहिए? किस टाइप का एनर्जी आता है? That we are going to study now. So the full moon of Taurus or Vesak is the most important full moon. So to which we have dedicated a lot of time in our 1 hour session. So we'll start quickly with our 3 full moons. So first is full moon of Aries. Okay, full moon of Aries is a festival of Easter भी कहा जाता है, and the energy of will. So will का energy आता है. So what happens is when the new cycle starts, it's a new growth. It's a new growth. जब हमने पहला साइकिल कंप्लीट किया, however we are, like in our businesses or jobs, there are appraisals, there are, you look at the performance of the last year, you set new targets for the new year and so on. Similarly, on Earth, when we are going through the cycles, from the month of Aries or full moon of Aries, we start getting the new energies of new beginning. So these are the energies of the will. Okay, the strong energies of the will are coming down. How to harness these energies so that we can start new beginnings in our lives is by meditating on this day and by assimilating these energies. Now, whenever there are full moons, and on every full moon, there is a lot of activity happening, so because there is more energy. So ultimately, we get energy from the sun, everybody. So even the daytime, we get energy from the sun. What happens on full moon days is, normally throughout the day we get energy from the sun, a special prana and special energies, but by the midnight in this certain area the amount of energy coming down is a little lower, so the energy becomes low on certain part of the world, and then in the again early morning it start recharging in that part of the world. Now during the full moon, the amount of energy which is being reflected from the moon and coming to us is very, very high. So because of that, there is no low time in general. So during the day, we are getting energy, and during the night, even more energies are coming. So there is a lot of activity happening 24/7 on the planet. Because of this activity happening at energy level, there is some activity happening in us also. So imagine Earth as a being, just like you are a human being, the Earth is also a being. You have aura, you have chakras. Similarly, Earth is a planet, also has chakras and the aura. When you have more energy, you feel dynamic, right? You feel dynamic, you want to do something, there is more activity in you. Similarly, there is more activity happening in the prana, and the energy of the earth. Now imagine when there is more activity in our system, the particles of our aura start vibrating at higher frequency, right? They vibrate more. Similarly, when there is more energy in the earth or in the aura of the earth, there is a lot of activity happening in human beings and every being. Now, why? We are just like particles of the aura for Mother Earth. Because of this activity, if your energy is able to match, for example, many people, those who meditate, like especially twin hearts meditation, we recommend if you have a heart problem, you should not do this meditation, right? Now, why? Because if the heart is not able to manage or cope with the increased energy vibration, heart may get affected. Similarly, on every full moon, people, so heart is just one organ in our body. Similarly, human beings are like particles of the, of the energy in the aura of Mother Earth. So what happens is, the moment Earth's energy increases, these particles start vibrating.
Now, the particles whose vibration is very, very low, for them it's too much change, too much activity. So then for them it's becomes, a problematic time. So for people who are not meditating or not increasing their energy level or not keeping their aura and energy body clean during the full moon, normally they experience some turmoil in the life or health. Okay. Now, why? Because the energy is increased a lot. There is more activity happening. But if you meditate during these days of full moon, your energy, so you what you're doing, you are putting extra effort in increasing your energy level. When you do that, your energy and Earth's energy will slightly come near, or qualitatively it will come near to each other. Then you will not get problematic, you will not experience any chaos, but rather you will feel powerful and you can use this energy to manifest things in your life. So that is how it is working. So that's why it is really important to meditate during the full moon. Now, on every full moon, energy is increasing. But on these three full moons, there are three different energy coming down, and for the first time in this cycle. Okay, so first is energy of the will, Aries. So it's for the new beginnings. Whenever you want to, now this is the when if you want to start something in your life new, this is the energy you need. This is very willful energy, very strong energy coming down on the planet. It's like it's preparing the land kind of thing. When you do farming, initially when you want to prepare the land, you have to upload land, right? So similar way, this energy will break things in your system which are not needed, which you want to get rid of, the old ideas and everything. This energy will help you. After this energy is done, then you go to the next cycle. So in this month, what you should be doing, I'll be talking about that later part. But the main energy which is coming down is the energy of the will, which prepares the land, which prepares the for the Vesak. So on during the Vesak, the energy which is coming for that ceremony or for that festival, the preparation start with this energy, the energy of the Aries or the first full moon. Okay. So energy of the will. Let's share. So here comes the first full moon. Done. And the dates and everything I will share later after the explanation. Now, second is full moon of Taurus. That is the festival of Vesak. Vesak is celebrated as now. Easter is celebrated as a resurrection of the Lord Jesus Christ also. So what is resurrection? It's actually a spiritually speaking, this is a growth, a new beginning. So what happens is the resurrection in spiritual sense is it's said that when you grow spiritually, you achieve certain milestone. You are actually you are taking the birth again, not physically, you are spiritually taking birth again. So they say when you are, especially when you achieve the level of certain initiation, you are actually resurrecting him. So you are dying and you are rebirthing, you are born, you are going to born again. I'm talking about in the spiritual sense. So this day signifies that kind of energy, which can help somebody get a new spiritual birth in a way, or the major change in the spiritual journey. Some of the things I'm not able to talk because we made it a general session. Okay. So this is the full moon of Aries or Easter, full moon of Easter. Now, when you look at religions, don't think that, okay, so the full moon of Easter, is it Christian? So no. If you look at the history, Lord Jesus Christ did not start the Christianity. People started. Lord Buddha did not start the Buddhism. He just came and gave teachings to uplift the humanity. Wherever they were born and wherever they traveled, people followed and they started the religion. Now, everybody, all the religions were formed after the one who started. Whoever, a particular religion is based on particular saints or particular great beings' teachings, right? That great being did not start any religion. That great being just came to give teachings to uplift the humanity, right? So not all great ones can born in the same country or same state, right? Everybody, because there are people across the globe. So there are many great people who were who took birth in different parts of the world. तो जब अलग अलग एरियाज में उन्होंने बर्थ लिया एंड दे स्टार्टेड गिविंग टीचिंग्स कि इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली तो आपने ये चीजें फॉलो करनी चाहिए. इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ? देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द रिलीजन्स.
बट इफ यू लुक एट, अगर एक बहुत ही ऊपरी पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, सो ऑल दीज जिनको हम रिलीजन समझते हैं, या जो एक पर्टिकुलर रिलीजन में किसी को पूजा जाता है या माना जाता है, दे आर जस्ट अ ग्रेट टीचर्स, so we are celebrating the teachings of great teachers, efforts of great teachers. We are celebrating the life of great teachers when we are doing meditation on particular days. Okay, now अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. So next is full moon of वैसाख. वैसाख के दिन क्या होता है? सो वैसाख मेडिटेशन क्यों किया जाता है? सो वैसाख मेडिटेशन इज कंसिडर्ड एज अ डे, ऐसा दिन है जहां पर जिस दिन लॉर्ड बुद्धा took birth, उन्होंने जन्म लिया सेम दिन पर, एंड देन ही एक्सपीरियंस्ड इल्यूमिनेशन, और उसी दिन देन ही वाज डाइड, बट एक्चुअली ही जस्ट वेंट टू द हायर रेल्म, एक हायर प्लेन में उनका प्रस्थान हुआ, काइंड ऑफ. नाउ सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज वैसाख. ओके, इस बारे में और बात करेंगे हम लोग वैसाख के बारे में लेटर. बट द एनर्जी विच कम्स इज विजडम और इंटेलिजेंस एनर्जी. ओके, now I am calling wisdom because intelligence is still intelligence is जो word is still, it is lower, not the higher form. Wisdom is the higher form. So it's the energy of wisdom. They whatever the knowledge and everything comes from this energy. If you want to learn something, if you want to gain wisdom, this is the meditation you should do. On this day, you should definitely meditate. So about this day, I will speak a lot later, more during the when I talk about Vesak. Now second third is the Gemini, full moon of Gemini और festival of Goodwill. ये जून में होता है, जून full moon of the month of June. इस दिन जो एनर्जी आती है is more of a love energy. Okay, so in till this day, now after Vesak, till this day, one should do lot of service. Okay, बहुत सारा सर्विस करना चाहिए हमने. Now why? On this day when energy comes down, it is very good for manifestation. So even if you have done service, और उस दिन आप जब मेडिटेट करते हो तो वो जो एनर्जी आएगा, the energy of love will help you manifest things, if you have good karma. That is why even on Vesak day, बहुत सारे even especially the Buddhist countries, तो in Buddhist countries में क्या किया जाता है कि of course everybody prepares for this particular day, special day, they meditate. But after that, they do a lot of charity. They give clothes, they give food to people. Now, why? Because that is the teaching. So when you receive wisdom, wisdom means in a way teachings. You understand what is right, wrong, what you should do. आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Then you bring those teachings in the action. तो आप वो चीजें करने लगते हो. So one way is by showing compassion to other people, by doing service. So in this month, a lot of service is done, and there is a manifestation of goodwill in that full moon. So actually, when we celebrate full moon, so we are actually the moon cycle is starting from the new moon to the next new moon, right? So it's a peak actually, जो full moon हम celebrate कर रहे हैं. But in entire that month, the energy of goodwill is coming. So that should manifest through you. हमारे through जो goodwill है, वो will to do good, यानी कुछ अच्छा करने का will बन के manifest होना चाहिए. That's the idea. So when you do a lot of service, you generate a lot of good karma, and this energy will help you do a lot of service actually. Okay, so the energy of the love, full moon of Gemini. So there are the three major full moons. So these are the dates. आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं. You can take screenshot of the screen. We have three major events coming. So full moon of Aries, 6th of April, 10:05 a.m. morning in India Standard Time. Then full moon of Taurus, 5th of May, 11:04 p.m. So रात को 11 बजे Indian Standard Time. And then full moon of Gemini, 4 जून को होगा सुबह 10 बजे, 10:07 पे. Okay, again Indian Standard. So if you are in other areas apart from India, you can maybe convert it into your local time. Clear? So I hope आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है. ओके, ना आई विल रिपीट, सो डोंट वरी. जो भी हम अभी सीख रहे हैं, अभी तो हम लोग सब मैंने समराइज किया है. ओके, जैसे समरी, वी आर गोइंग इनटू डिटेल नाउ. ओके, सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अज्यूम, एंड देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड. आई विल चेंज द स्क्रीन. ओके, साउंड्स गुड, थैंक यू.
So let's go to next page. So if you want to, if even if you have taken this, the screenshot, या आपको लगता है कि आप नोट कर लिया, पर फिर भी if you want कि हम आपको रिमाइंडर सेंड करें, ओके, तो आप लोग ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज फुल मून कम्युनिटी. यहाँ पर सिर्फ फुल मून के मैसेज आएंगे और कोई मैसेज नहीं आएगा. सो यू कैन स्कैन विथ योर QR कोड, और आई विल टाइप इन चैट ऑल्सो सो दैट आप लोग यूज कर सके. जस्ट अ मिनट, आई विल टाइप इन चैट एज वेल. Yeah, just give me a minute. I'm trying to type in chat something. Okay, so you can join community by clicking on this link. Okay, जो मैंने अभी chat में add किया है. Okay, so this is done. Now, so those are using laptop, आप लोग अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर सकते हैं. You can join this community. So if you join this community, हर full moon के पहले preparation, because these are 3 major full moons. So normally we just post about the full moon date and full moon का link होता है. But for these 3 full moons, we'll be sending you some additional information as well. Okay. So as we said, पहला full moon है on 6th of April, the peak time. Now, why the time is given? हर full moon का peak time होता है. Peak time यानी जिस समय जो luminescence है या फिर illumination of the moon, यानी maximum area of the moon is illuminated. Okay, तो उसे कहते हैं peak of the full moon. तो वो एक ही बार होता है पूरे ग्लोब के लिए, पूरे अर्थ के लिए. दिन है, रात है, दैट डजंट मैटर. ओके, सो एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है. देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम. सो इस मोमेंट पर हमें मेडिटेशन करना है 10:05 पर. सो वी शुड स्टार्ट मे बी 10 मिनट्स बिफोर और 15 मिनट्स बिफोर टू स्टार्ट विद आवर मेडिटेशन, सो दैट व्हेन वी आर इन साइलेंस एट दैट टाइम इट शुड बी द पीक ऑफ द फुल मून. Okay, so that's the idea. That's why timing is important. Okay, now going forward. Now, this is Vesak festival. Now, what is Vesak? So on the day of Vesak, that is going to come on the 5th of May, 11:04 per रात को in Indian Standard Time. So what will happen is, it is said, the legends or the stories go back in time. तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन the living Buddha or Lord Buddha, he will be coming down on the earth and blessing the earth and each and every being with the energy of the higher consciousness. So see, when we look at Buddha, so Buddha कोई नाम नहीं है. Buddha is a position or a title, So there are ranks on in spiritual development. So Buddha is one level जब हमारा consciousness जो है, हमारा खुद की चेतना है, consciousness इस हद तक पहुंचता है कि जहां पर we don't need to come back to the planet anymore. Okay, so there is a Buddha level. So there is something called initiation, first initiation, second initiation, third initiation, fourth initiation, and so on and so on. So just say to become an arhat, what you learn in Arhatic yoga is how to become an arhat. That is a 4th initiation, right? Then after that, then there are masters, holy masters, and then there are Chauhans, Mahachohans, and then there are Bodhisattvas and Buddhas. So this is their level. This is how a spiritual progress happens, or there are major milestones on the spiritual journey. So Buddha is the enlightened one. Okay, the one who is fully enlightened becomes Buddha. वैसा इंसान को बुद्ध, ऐसी सोल को बुद्धा कहा जाता है. So on this day, Lord Buddha or Gautama Buddha particularly, so when he was in the body on this particular day, he was born and then he achieved enlightenment, and on the same day he also left the physical body and went into the higher realms. But he made a promise that every year, once in a year, on this particular day, that is on this particular full moon, he will come down from that higher consciousness to the level of earth or energy, and then he will bless the world. So what level is coming? Is he manifesting? वो physically आ रहे क्या? So the answer is no. He's not coming physically.
So what happens, जैसे हमारा energy body है, even earth has energy body. So there it is said that again, according to the stories, that uh yeah, so according to the stories, the way, so हमारा physical body and then we have energy body. Similarly, the earth has physical body and earth has energy body. Then we have different bodies beyond the energy body. Similarly, even the earth has many other bodies after energy body. Okay. So Lord Buddha and with other hierarchy and all the other great beings, jo, as I said, holy masters, bodhisattvas, then the adepts, okay, Chohan Mahachohan. So all these great beings, they come together at very lower plane, कि जहां से हमें एनर्जी एक्सेस करना बहुत आसान है. For us to access the energies of Buddha is next to impossible. We cannot tap into the energies of the Buddha. So on this particular, so imagine, like, you can't meet somebody. For example, let's say you're not able to meet the prime minister. There is some work you want to get things done. You have project in hand, but you cannot meet the prime minister. So you have to go through all the, people, the process, the protocols, and then maybe your request will reach to, or you will, your whatever your ideas you want to share or a project you want to share, that will go till the prime minister, right? Or the president. Now imagine for one day in a year, the president or prime minister, जो भी आपके country में रहेंगे, wherever you are in India, they say, okay, I will give you 10 minutes and then we will talk. So what is happening? A person who is at very high rank is coming down to your level so that you can speak and you can share, you can talk. Similarly, spiritually, Lord Buddha is coming down to the very lower level where we can just by meditation, simple meditation technique, we can reach to that level. And then we can meet somewhere, midway. Not midway, it's still very close to us. But जहां तक हमारा consciousness नहीं पहुंच सकता है, जहां तक सिर्फ पार्टली हम लोग बॉर्डर को टच कर सकते हैं, वहां तक लॉर्ड बुद्धा का कॉन्शियसनेस आता है. एंड दैट्स व्हाई दिस डे इज स्पेशल. सो यू कैन डायरेक्टली टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ द बुद्धा. Got it? So Vesak is this day, so where he comes down and then Lord Buddha blesses the entire earth. Now, the amount of energy projects is tremendous. Now, there is a spiritual significance. Yes, spiritual significance है, इसीलिए दुनिया भर में सिर्फ प्राणी किलिंग या पर्टिकुलर थियोसॉफी, लूसिस ट्रस्ट, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं. सो देयर आर हर एक हर एक स्तर पर, इवन बुद्धिस्ट कंट्रीज और एवरीवेयर, लाखों करोड़ों लोग इस दिन पर, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेडिटेशन करते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट अस, हम ही लोग कर रहे हैं या कुछ सर्टेन या 100 200 400 500 लोग कर रहे, ऐसा नहीं है. मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग. Okay, I guess a number globally will go to crore or more, maybe people those who meditate on this day. So everybody is coming together. Now why? Because it is special time. Because in your meditation, so imagine in meditation we may not reach to our higher soul. हम खुद के आत्मा तक भी नहीं पहुंच सकते, उससे भी नीचे वाले लेवल पर लॉर्ड बुद्धा's एनर्जी कम. So even if you are not maybe one with your higher soul, still you like a complete oneness nahi, of course. So, but still you can tap into the energies of the Buddha. That's the speciality of this day. So it's very special. So on this day, meditation must be done. But if you want to meditate on this day, where to meditate? In any group. Now, just like in our body, if you have done soul class, some of you have done soul class, so you know where our consciousness or the connection of the soul lies, right? हमारे अंदर वो कौन सा spot है जहां पर the seed of consciousness होता है, right? Similarly, planet Earth का भी seed of consciousness एक जगह पर होता है, पर ऐसा माना जाता है कि that place is in Himalayas somewhere, okay? And in the Himalayas, there is a place called as Shambhala or Vesak Valley. In a way, so वहां पर Lord Buddha आते हैं and there is a ceremony happening. Okay, just I'll share the image. So this is that place. So this is known as the Vesak Valley. It's a physical place. ऐसा there are some books, and if you want to read, there is a Masters and the Path, एक ऐसा book है जिसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है. So this is a physical place. ऐसा नहीं कि physical place नहीं है. But if you go physically here, will you get to see the Buddha? No. Okay, so he's not coming to the physical level. He's not coming to the physical plane.
ओके, वो फिजिकल शरीर में नहीं आ रहे, he is coming in the energetic or spiritual plane, okay, but and on that spot, for example, we have seed of consciousness in the body, right? Those who have done soul class, आप लोग समझ पाएंगे. There is a seed of consciousness in the body. कहाँ पर है, now, if a surgeon opens your body, will that surgeon able to see the seed of consciousness? No. Now why? Because seed of consciousness is in the physical body but in the different plane. Similarly, that place, the Vesak Valley, is there, but Shambhala is the energetic place, is lying in the spiritual world or energy world. It's not in the physical world. So if you go there, there are many people, there are some stories, if you Google about it, there are some people have to go, tried to go there, but nobody saw anything as such, right? So because this is happening in the energy world. So there are many things like formation, etc., etc. I'm not going into those details because that is not needed at this moment for us. Okay, you see a star. So what happens is, why it is shown as white? There is a reason. So Lord Buddha comes, and there is an altar. यहाँ पर it is an altar. Altar means जैसे पूजा घर होता है हमारे घर में, एक sacred place जहाँ पर पूजा होती है. Something like that is altar. And you see this star, 5-pointed star. It's all made of white. So they are called as the White Brotherhood. What is White Brotherhood? White Brotherhood is beyond religion. Great souls who may be working for different religions at this moment. Somebody might be working, in spreading or understanding the teachings of Bhagavad Gita. Somebody might be studying and trying to preach जो teachings of Christianity somewhere. कोई होगा जो ताओ की टीचिंग स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई होगा जहां पर बुद्धिज्म की टीचिंग स्प्रेड करने के लिए काम कर रहा होगा, कोई बड़ा इंसान जो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है. बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाइट ब्रदरहुड, वेयर दे, मतलब ये लोग किसी रिलीजन के लिए काम नहीं कर रहे. एवरीबडी हैज अ रोल, इट्स लाइक दिस. वी हैड मेनी, जब हम लोग स्कूल में थे, देयर वर बहुत सारे टीचर थे जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, राइट? बट अल्टीमेटली दे आर पार्ट ऑफ द कॉलेज. Ultimately, they are part of the school. Ultimately, they are part of the education system. वो education system का part है. वो लोग अपना अपना role play कर रहे हैं. But they are all together in this, right? So similarly is the White Brotherhood. Okay, so हमें लगेगा कि नहीं, different spiritual teachers अलग अलग religion में, अलग अलग school of thought, अलग अलग school of thought में काम कर रहे हैं. जैसे like master was working towards development of pranic healing. मास्टर चौगा से वर्किंग फॉर कि प्राणिक हीलिंग डेवलप हो, हीलिंग डेवलप हो, हीलिंग लोग कर सके. दिस इज वन वे. देयर मे बी सम पीपल, कुछ लोग होंगे जो जस्ट काम कर रहे हैं ओनली ऑन दी सर्टेन एस्पेक्ट, लाइक कुंडलिनी होगा, नथिंग एल्स. ओके, और समबडी इज वर्किंग ओनली ऑन दी ध्यान और zen और माइंडफुलनेस. सो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है. एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स देयर असाइनमेंट और उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, बट दे आर ऑल वन एंड दे आर पार्ट ऑफ व्हाइट ब्रदरहुड. Okay, so these are those beings who are part of White Brotherhood. So they are like, if the earth is a school, they are all our teachers, everybody together, And then there are many other saints, many other spiritual disciples, senior disciples, जो spiritually evolved है. ऐसे भी लोग हैं जो आप आगे देख सकते हो यहाँ पर. Okay, so this is the ceremony. So in this ceremony, जो लॉर्ड बुद्धा है वो आते हैं एंड देन ही ब्लेसेस विद लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर प्लैनेट. सो व्हाट हैपेंस, क्या मिलता है इस दिन? सो जो एनर्जी आता है, वो एनर्जी अर्थ को अगले 1 साल तक फंक्शन करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट मच एनर्जी इज गिवन. स्पिरिचुअली प्लैनेट को ग्रो होने के लिए, स्पिरिचुअली हर एक बीइंग को ग्रो होने के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग को ग्रो होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज गिवन. द चैलेंज इज कि हम उसे कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं और एक्सेस कर पाते हैं. दैट इज द चैलेंज. अब एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो एक दिन में भी या 10 मिनट में पूरे अर्थ को इथरिक लेवल पर, यानी एनर्जी लेवल तक, यानी हमारे ऑरा लेवल तक नहीं लाया जा सकता. इट्स स्टिल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और उसे नीचे लाने के लिए मेंटल, इमोशनल, इथरिक या एनर्जेटिक एंड देन हमारा फिजिकल बॉडी, तो वहां तक लाना एक दिन में पॉसिबल नहीं है. तो इस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो उस दिन बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी आता है और उसके बाद लॉर्ड बुद्धा खुद आते हैं. बट उसके बाद भी वो एनर्जी इंस्टॉलमेंट में, 12 इंस्टॉलमेंट में एवरी मंथ, हर फुल मून को वो एनर्जी
इथरिक लेवल पर या प्लैनेट के जो फिजिकल बॉडी है, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी, तो मदर अर्थ को फिजिकल बॉडी में, फिजिकल मदर अर्थ में वो एनर्जी डाली जाती है एवरी फुल मून। सो इसलिए सारे ही फुल मून इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर फुल मून को डिफरेंट टाइप का एनर्जी आ रहा है। ओके, बट this is the most important, Vesak. Now why? Because you have an opportunity that you can access to the energies of the Lord Buddha. Okay, now another thing, why we should meditate, हमें एनर्जी मिलेगा, that is one thing. Okay, well and good, but it's a world service. Okay, तो ये एक सर्विस का ही माध्यम है। जब इस दिन आप मेडिटेट करते हो, यू आर फैसिलिटेटिंग, लाइक इफ यू कैन सी हियर व्हाई देयर इज अ ग्रेट ब्रदरहुड, जो एक सर्टेन फॉर्मेशन मेडिटेट कर रहे हैं, बिकॉज वो बुद्धा से जो एनर्जी आ रही है उसे स्टेप डाउन कर रहे हैं। देन एनर्जी अगेन जो सीनियर डिसाइपल्स है जो मेडिटेट कर रहे हैं, दे विल स्टेप डाउन, राइट, और वो धीरे धीरे और नीचे प्लेन पर और नीचे के प्लेन पर लेके आएंगे ना। अगर बहुत कम लोग मेडिटेट करेंगे, okay, so what will happen, there will be less channels to bring that energy down into the earth. जितने ज्यादा लोग मेडिटेट करेंगे उतना वो एनर्जी अर्थ के डीप लेवल तक जाएगा। Now, जितने ज्यादा लोग मेडिटेट करेंगे मीन्स जितने लोग उस मोमेंट पर अवेलेबल रहेंगे और मेडिटेट करेंगे। सो इट मीन्स व्हाट, ये जितने लोग ज्यादा मेडिटेट करेंगे उतने ही ज्यादा ऐसे लोगों को हेल्प होगी जो मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मीन्स द होल ह्यूमैनिटी। सो when you meditate on this day, इस दिन जब आप मेडिटेशन करते हो, you are actually becoming part of the very great hierarchy in a way. आप you are playing a very important role, जहां से आपसे एनर्जी दूसरों तक जाएगा। Now ये important क्यों है? Because see, God being God और Buddha being Buddha cannot directly give energy to everybody, because लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे घर में जो बल्ब होता है, अगर हम इसे एकदम पावर हाउस को लगा देंगे, या छोड़ो पावर हाउस छोड़ दीजिए, मैन्युफैक्चर होता है पावर, बट इवन इफ यू आप डायरेक्टली मेन लाइन को लगा दोगे जहां पर पावर स्टेशन है इन योर एरिया, इट विल बस्ट, राइट। नाउ व्हाई? बिकॉज टू मच एनर्जी। सो देन देयर इज देयर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, एंड देयर इज वन ट्रांसफार्मर जस्ट आउटसाइड योर होम इन योर एरिया। उसका काम क्या है? टू reduce the voltage to the level जहां पर घर के जो appliances, in every home there are appliances, bulbs, lights, everything, they will operate properly, function properly. When you meditate, you act like that transformer in your area. अगर आपके एरिया में there are thousands of people living, they are not meditating, but because you meditate, they get the energy. So it's a world service. So on this day, इस दिन आप जब meditate कर रहे हो, करते हो, you are being part of the great event, a great hierarchy. It's a great privilege कि आप मेडिटेट कर पाओ उस दिन. It's a great responsibility at the same time, right? So इस दिन मेडिटेशन जरूर करें, वैसाख वाले दिन. Okay, so there is a great teacher known as Master Dwalkul or Master DK. He said कि कोई भी कीमत बहुत बड़ी नहीं है अगर आपको इस दिन मेडिटेशन करने का मौका दिया जाए. ओके, देयर इज नो कॉस्ट टू हाई टू बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. ओके, कोई भी चीज आपको यानी मतलब कोई भी कॉस्ट आपको अगर कोई बोले कि नहीं अरबों खरबों रुपए भी दिए जाए देने पड़े टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट और मेडिटेशन, तो भी वो बहुत कम रकम है. इट्स नॉट इनफ. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. सो इट इज मतलब ये वो बताना चाहते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है उस दिन मेडिटेट करना. सो उस दिन जरूर मेडिटेट करें. आप कहीं पर भी हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप मे बी यू आर इन हॉस्पिटल, यू आर इन आई डोंट नो इन द ऑफिस, यू आर वर्किंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, टेक लीव, टेक ब्रेक, एडजस्ट योर लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक, मॉर्निंग ब्रेक. अभी तो रात है इंडिया में, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. आप यू विल नॉट बी वर्किंग एट दैट मोमेंट, बट एस यू हैव शिफ्ट वर्किंग, you are working in a shift, still you should meditate. You take a break at that time, but you should definitely meditate. In every city there will be group meditations, तो आप उस group meditation को join करें. Especially on this day one should meditate in the group, preferably. Okay, जहां तक हो सके group में meditate करें. It's a festival. Okay, it's not individual meditation. So जहां तक हो सके try to meditate in the group. If not possible at all, then it is okay to do meditate alone also. But जहां तक हो सके try to connect with some group physically. Physically एक group में जब meditate करते तो what will happen? हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद ग्रेट डिविनिटी, जिसके बारे में आपने पुरानी फिल्म में सीखा है, देयर इज अ स्पिरिचुअल गॉड, राइट?
तो हमारे जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो मर्ज होता है। तो व्हेन यू आर जैसे 7 पीपल, आप 7 लोगों के साथ में मेडिटेशन कर रहे हो, सातों का मिलके एक स्पिरिचुअल कॉर्ड या एक कनेक्शन बनता है। बिकॉज ऑफ दिस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास आता है दैट इज इवन मोर, मच मच हायर। सो दैट्स वाई इस दिन ग्रुप में ही मेडिटेशन करना चाहिए। सो मेक इट अ रूल, जो लोग एटलीस्ट यू आर स्पेंडिंग 1 hour ऑफ योर डे, और आप यहाँ पर आज इवनिंग योर फैमिली इज देयर एंड एवरीबडी, बट स्टिल यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे ये सेशन अटेंड करना है। Others I don't know, but I would definitely request you and urge you and recommend you कि आप लोग ग्रुप में जरूर मेडिटेशन करें। इफ यू कैनॉट गो, देर इज नो ग्रुप इन योर, आपके सिटी में ग्रुप नहीं है, मे बी आप जिस शहर में आज या उस समय रहेंगे वैसाख के दिन, सो फाइंड 7 family members and maybe some neighbors and make a group of 7 and meditate। 7 लोगों का ग्रुप बना के मेडिटेट करें। आपके नेबर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, एनीबडी कैन बी, और कॉल योर फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स को बुलाओ, बट इस दिन जरूर मेडिटेट करें ग्रुप में। ओके, so this is the benefit and the importance of this day. Now from this day onwards, फिर आपने क्या करना चाहिए? You should do service some or the other way. So most of you are healers here now, so you should heal. If you do not know healing, do some way of volunteering somewhere. But after this meditation for next 1 month, उसके बाद 1 महीने तक जितना हो सके उस एनर्जी को इस्तेमाल करें, बिकॉज एनर्जी विल कम, बट अगर आप एनर्जी बहुत सारा आएगा, अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो वो रहेगा नहीं। सो वन वे कि वो एनर्जी आपके थ्रू पास होकर आपके अंदर सिस्टम में असिमिलेट हो, द वे इज सर्विस। सो लुक फॉर सम और द अदर वे ऑफ एवेन्यू ऑफ सर्विस आफ्टर द वैसाख। ओके, so those who are in Pune will be having lot of avenues, so don't worry. Those who are in other cities, हम लोग देखेंगे कि आपको कहीं पर कनेक्ट कर सके, but we will have avenues for service. Okay, so service जरूर करें किसी ना किसी फॉर्म में, donate money, donate food, donate clothes, donations करें उस महीने में, do it frequently, not at once. मतलब आप एक x amount देने चाहो तो divide that amount into multiple small amounts and do it frequently. Do healings, as I said earlier also, do free healing camps, you can do many things. Okay, but service is important. Now, sorry, before we go ahead, yeah, so service is important. Now we will talk about, so I hope so far it is clear. अगर आप लोग थोड़ा feedback दे, that will be helpful. So far it is clear. Up, you can type in chat clear. Sorry, I'm looking down because I'm looking at the screen. If you can type in chat, I will wait. बीच बीच में आई एम स्पीकिंग इंग्लिश हो जाता है मेरा, तो आप मुझे याद दिलाए। आई विल अगेन स्पीक इन हिंदी। वेरी क्लियर, ओके, गुड। सो ये था इंपॉर्टेंस वाला पार्ट। आई होप इंपॉर्टेंस पार्ट इज क्लियर। सो देन अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट। ओके, नाउ preparation. So preparation part is equally important because on this day, if you want to take maximum advantage, हमारा शरीर, physical body, the aura, the chakras, everything should be ready. If our chakras and auras are not ready, they are dirty, have used up energy, then we will not get the benefit which we can normally. Okay, so how to take maximum benefit? It depends on the preparation. So why we are taking session today? हम आज ये session क्यों कर रहे हैं? From this full moon, that full moon of Aries, you are getting the will energy. Now, आपको ये एनर्जी का इस्तेमाल करना है टू प्रिपेयर टू ब्रेक द ओल्ड सेल्फ। हमारे अंदर जो पुराना सेल्फ है, हमारा जो पुराना वर्जन है, which is outdated, have maybe the old thoughts, unwanted emotions, unwanted qualities हम में है जो हमें अभी नहीं चाहिए। तो ये एनर्जी आपको हेल्प करेगा टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस। ओके, सो 1 महीने तक हमें बहुत सारा खुद का प्यूरिफिकेशन करना है, खुद को प्यूरिफाई करना है। द मोर वी प्यूरिफाई, वैसाख के मेडिटेशन के दिन हमें उतना ही ज्यादा हायर लेवल पर तक हमारा कॉन्शियसनेस जाएगा एंड विल गेट दैट मच एनर्जी ऑल्सो, उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगा। नाउ देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ वैसाख। आई विल एड वन मोर थिंग। सो वैसाख इज नॉट जस्ट फॉर स्पिरिचुअल पर्पस, बाय द वे। Many scientists get many new ideas during the Vesak full moon. So it's not just about ki, maybe you are a businessman
or you are into a science student, or you are just a student right now, everybody will get everything, whatever is the plan for the next 1 year. सी जैसे किसी ना किसी साल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ था, इन्वेंट हुआ था, किसी ना किसी साल कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, किसी ना किसी साल लाइट्स इन्वेंट हुए थे, किसी ना किसी ईयर में फैन, एसी, एवरीथिंग वाज इन्वेंटेड, राइट? नाउ ये सारी चीजें आर मेकिंग इन अ बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी, राइट? नाउ इमेजिन जिसने एसी बनाया, आई डोंट नो द नेम, बट गॉड ब्लेस दैट गाय और पर्सन और लेडी, whoever that was. Because of that, you have comfort. You get comfort in your house. अगर heat भी है, still you are comfortable. So inventions जो होते हैं, they are not coming by fluke. Okay, inventions are coming because the great ones wants to release certain ideas, certain new things for the world. If you want to become that instrument, no, I'm not, मैंने scientific innovations का example दिया because it is considered normally as an opposite of spirituality in general. That's why. But even in business, you may have a new idea to do something new. In your profession, whatever skill set you have, if you are a doctor, you may get new idea of doing something in a new way, helping people in a new way. So ये सारी चीजें possible है, provided we are meditating on that day. So if you look at the history, many scientists write about meditation. They were meditating. Like, if you study, there is a very powerful book in Theosophy, it's called Secret Doctrine, written by Madame Blavatsky. They say when Einstein left the body, on his desk, he had this book. His niece gave a testimony of that. जो भतीजी थी आइंस्टाइन की, उन्होंने वो टेस्टिमोनियल दिया कि Einstein had secret doctrine with him. Now, and he had a lot of notes. Okay, book के हर एक पन्ने पर he would write some notes. Now, he being one of the greatest scientists of the centuries, in the last few centuries, has been one of the greatest in last maybe several centuries rather. But he still believed that there is something which is beyond physical, and he referred these books. So what I'm trying to say is, मेडिटेशन, इस दिन मेडिटेट करना, डोंट थिंक ये सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, ये सबके लिए। आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ask them to meditate on this day. If they are into business, ask them to meditate on this day. If they are into certain job, maybe doctor है, lawyer है, engineer है, whatever their profession is, they should meditate. Because उन्हें क्या मिलेगा, you never know. And how they will use it, maybe they'll become a great valuable asset to the humanity by doing something great because of that energy. Okay, so it's for everybody. Now, coming back to the preparation part. So how to prepare? So we have to prepare at many levels. So number one is physical. Okay, तो सबसे पहले exercise. Do regular exercise. अगर आप नहीं भी करते होंगे, अभी तक कर रहे होंगे अभी तक regularly, so start doing it from this full moon till the Vesak. Every day you have to exercise and do more. Don't just do the जो मेडिटेशन के पहले थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया जाता है उतना ही नहीं, स्वेट आना चाहिए, यू शुड परस्पायर, उतना आपको मेडिटेट एक्सरसाइज करना है. ओके, नाउ व्हाई? बिकॉज एक्सरसाइज डिटॉक्सेस योर बॉडी, आपके फिजिकल बॉडी को डिटॉक्स करता है, और हमारे मेरिडियंस में जो यूज्ड अप एनर्जी है उसे भी एक्सपेल करने में मदद करता है. ओके, सो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मस्ट थिंग टू डू ड्यूरिंग दिस टाइम. आप ये सारी चीजें लिख के रख सकते हो, एक्सरसाइज एंड जो भी मैं आगे चीजें बताऊंगा. अनदर थिंग इज सॉल्ट वाटर बाथ रोज. आप में से कुछ लोग शायद रोज सॉल्ट वाटर बात कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑल्टरनेट डे, कुछ लोग कभी कभी, कुछ लोग कभी नहीं. बट नाउ फॉर दिस वन month you will do it every day. So it is must again. Why I'm saying must? Because I want you to have the best experience. मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा अनुभव है. That's why मैं चीजें must बोल रहा हूँ. Of course मैं भी फोर्स नहीं कर सकता, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली करना या नहीं ये आपका चॉइस है. सो सॉल्ट एंड वाटर बाथ, पानी से और नमक से नहाए. ओके, तो पूरे शरीर पर अच्छे से नमक लगाना है, सोप से नहाने के बाद गीले बदन पर, और नमक लगाकर 2 मिनट रुकना है और फिर वॉश ऑफ करना है. सो दिस यू शुड डू एवरी डे. देन फास्टिंग, उपवास जिसे हम कहते हैं, या फास्टिंग, वन शुड डू फास्टिंग. यू कैन गो फॉर, अगर आप फुल फास्ट नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस, ट्राई स्टार्ट विद फ्रूट और जूस फास्ट. एक दिन सिर्फ जूस लेना है या सिर्फ फ्रूट्स खाने, नथिंग एल्स. नाउ व्हाई?
फ्रूट्स का या जूस का जो प्राणा होता है दैट इज वेरी सटल, वेरी बहुत बारीक होता है वो एनर्जी, रिफाइंड एनर्जी होता है. सो इट्स गुड फॉर योर बॉडी, गुड फॉर योर मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है. ओके, ग्रॉसर एनर्जीज ना खाए इन दिस मंथ, पर्टिकुलरली एनीथिंग विच ग्रोज अंडर द अर्थ. अर्थ के अंदर जो होता है, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ ग्राउंड प्राणा विच इज लिटिल ग्रॉसर. तो इस पीरियड में अवॉइड ईटिंग समथिंग विच इज अंडर द ग्राउंड. eat something which is always outside, above the ground जो grow होते हैं चीजें. Now, it doesn't mean कि आप forever under the ground वाली चीजें ना खाएं. I'm talking about कंद मूड़े या फिर potato or onion and so on. The reason is you need gross energy also for the well-being of your physical body. But हमें इस month में we want to focus on our spiritual life, meditation. कि हमारा meditation अच्छे quality का हो, so that we can tap into the level, उस लेवल तक पहुंच सके जिस लेवल तक लॉर्ड बुद्ध नीचे आ रहे. Got it? So that's why his energies are coming down, his consciousness is coming down. That's why we are doing all this. So it's not something to be done forever. Even I will not do forever ki I will not be on food diet forever, but I will try maximum in this month. Okay. Then complete fast once a week. हफ्ते में एक बार fast करे. So fast is good. It detoxifies your body. जो ओल्ड सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली ओल्ड ब्लड सेल्स, दे गेट वॉर्न, और ब्लड सेल्स होती है उनको हमारा स्प्लीन डिसइंटीग्रेट करता है. सो इट्स वेरी गुड टू फास्ट वंस इन अ व्हाइल. एंड इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट फास्टिंग इज कॉमन इन मेनी कल्चर्स इन दिस पीरियड. सो नवरात्रि हुआ, so नवरात्रि में लोग फास्ट करते हैं इन दिस पीरियड. इफ यू लुक एट नाउ Christians had Lent, so they also fast. In Islam, there was Roza recently, so they were fasting. So somehow everybody was some or the other way practicing fasting or purification. Now meditation. Then we'll talk about the emotional and mental body. So we have to meditate regularly. So do regular meditation, especially जब ट्विन मेडिटेशन करे उस समय अपने जो दोनों पैर है एक टब में पानी ले नमक का, और उसमें पैर रख के मेडिटेशन करें. एंकल के ऊपर तक थोड़ा सा पानी आना चाहिए, और उसमें आपको पानी में पैर डिप करने और मेडिटेट करना है. थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, हल्का सा गरम, नॉट टू कोल्ड, हल्का सा गरम पानी, और उसमें नमक, एंड उसमें आप चाहो तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऐड कर सकते हो. एंड ब्लेस, चैंट ओम फॉर 7 times एंड ब्लेस द वाटर, एंड देन डिप योर फीट एंड डू मेडिटेशन. और उसके बाद मेडिटेशन करें. दिस विल हेल्प यू टू इस तरह से फ्लशिंग इफेक्ट. जब मेडिटेशन करते हैं बहुत सारा यूज्ड अप एनर्जी नीचे की ओर जाता है, बिकॉज एनर्जी इज कमिंग डाउन. नाउ ये जो एनर्जी है, इट विल कलेक्ट ऑल द अनवांटेड एनर्जी इन योर ऑरा, और वो भी नीचे लेकर जाएगा, सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू मेडिटेट दिस वे. ओके, इट इज वेरी हेल्पफुल. ऑल्सो आपके जो मेडिटेशन की इनर एक्सपीरियंसेस है, दे विल ऑल्सो इंप्रूव. नेक्स्ट, लिव वर्चुअसली. ओके, सो वर्चुअस को फॉलो करें. Okay, try to live virtuously throughout this period. So आपने बेसिक में जो वर्चुअस सीखे, आपके पास बुक है, आई एम श्योर. इफ यू हैव डन बेसिक, इफ यू हैव डन सोल, उसमें भी आपको बुक में वर्चुअस दे हुए. इवन इन द सेल्फ हीलिंग यू हैव सम नोट्स. रीड थ्रू इट. Try to dedicate a day. Okay, the Monday is a loving kindness day, a non-injury day. Tuesday is honesty day. Give your entire week a schedule. Try to follow those virtues. Try to live by the virtues. उन जो मूल्य हमने सीखे, उन मूल्यों के हिसाब से जीने की कोशिश करें. ओके, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड से भी और डाइट से भी. इफ यू आर वेजिटेरियन बट वर्चुअसली हम नहीं मूल्य फॉलो नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. Then pray. Even if you don't pray regularly, now you should pray. So every day you should pray for the betterment of the world. Okay. So before you go to bed, light a lamp, a small lamp. आप दिया लगाए छोटा सा. Look at the lamp. Then close your eyes. Pray. Then go to bed and sleep. Don't look at the phone then. Okay. Preferably from this full moon to the next full moon. जस्ट जब भी आपको सोना है, नाउ दिस इज द टाइम फॉर द स्लीप. आपको लगता है कि अब मुझे जाकर सोना है, उस समय जाकर छोटा सा दिया लगाइए, एंड देन लुक एट इट फॉर सम टाइम. क्लोज योर आईज, देन आप प्रेयर करो, देन ओपन योर आईज, गो टू बेड एंड स्लीप. व्हाट विल हैपन, जब आप एंड में व्हेन यू आर going to the bed, last thing, you should not see cell phone or screen in general. Even don't read the book. During this time, look at the flame. When you look at the flame, flame is formless.
but at the same time it has form, it is illuminating, it is light. So जब आप उसे देखते हो, it helps you have a better sleep life. आपका जो sleep में भी life है, that will be more spiritual. That's why. Then I am affirmation. If you have done soul class, so you know that you should meditate regularly, soul meditation once in a week at least, but you should do I am affirmation every day. Practice soul affirmation every day. रोज करना है. So this you can do in the evening when you light that small lamp. Okay. छोटा दिया जब लगाएंगे उस समय आप soul affirmation कर सकते हो. So every day when you do soul affirmation, आपका spiritual cord बड़ा होगा and that will help you have a better result with meditation. Then self healing. और चक्रास को रोज क्लीन करे, रोज थोड़ा थोड़ा खुद का सेल्फ फीलिंग करे. अप्लाई जनरल स्वीपिंग. इफ यू हैव डन बेसिक, यूज बेसिक टेक्निक. इफ यू हैव डन एडवांस्ड, यूज एडवांस्ड टेक्निक्स. इफ यू हैव डन साइकोथेरेपी, डू साइकोथेरेपी टू योरसेल्फ. Heal yourself every day. Cleaner chakras and aura can be of great benefit during the Vesak. Okay, chakras और aura जितने, they are main things which will be using for the meditation, जिससे हम वो energies का channel बनने वाले हैं. तो it's like this. Many of you might have done crystal class also. क्रिस्टल से हीलिंग किया जाता है, ये आपने सुना होगा. तो जो क्रिस्टल होता है वो जितना क्लीन उतना अच्छा हीलिंग के लिए. अगर क्रिस्टल का क्लीन होना जरूरी है फॉर हीलिंग, नाउ थिंक अबाउट यू. यू विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द वर्ल्ड. आप दुनिया को ब्लेस करने के लिए आप एक माध्यम बनेंगे उस दिन. तो आप कितने क्लीन होने चाहिए? आप जितने क्लीन रहोगे उतनी ज्यादा आपके थ्रू जाएगी. जैसे क्लीन क्रिस्टल से ज्यादा एनर्जी पास होती है, वैसे ही जिनका और चक्रास क्लीन होते हैं ऐसे व्यक्ति से बहुत सारी ऊर्जा पास होती है. सो एंड वी बिकम अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड डू रेगुलरली. I will just go through it one more time. You can write it down. Exercise. You can take a screenshot also, no problem. Exercise, salt and water bath, fasting, meditation, virtuously जीना है हमें, prayer करना है regularly, I am affirmation करना है, self healing करना है. Okay. Now, along with that, आप breathing practices कर सकते हो. During this time, हमने जो breathing सीखा है courses में, do that breathing technique. Okay, so प्राणायाम जैसा हमने जो ब्रीदिंग सीखा पैटर्न में 7-1 या 6-3, you can do those breathings. साथ ही along with this breathing, if possible, when you are just going to do breathing, before that you clean your aura and then you do breathing. It will be helpful, more helpful. Okay, so breathing practices करे, that is of the great benefit. Now, apart from that, when you take bath, you may also use lavender oil when you're taking bath. That will be helpful. Okay. So that's it. These are the things one should do regularly. Okay. Now, one more practice which is not normally taught in the class but is very good is chanting Om. So, दिन में बहुत बार Om chant करें. Om, Amin, या Amen, whichever word you like. All are divine words in a way. So, why? So when you say Om, हमारा जो vibration है शरीर का वो बढ़ता है. So I would recommend you can set an alarm. आप alarm लगा सकते हो कि okay, every after 1 hour you will chant Om few times. Chanting Om will have a great impact on your aura, and this will help you definitely to prepare well for the Vesak. So chanting Om frequently. एक बार नहीं सिर्फ दिन में, but कई बार होना चाहिए वो. Okay, so ये additional thing लिख लीजिए, which is not written in the my slides. So that's it. So may you have a great experience during these 3 festivals. That is our wish and prayer. So be it. These are again, I'm sure आप लोग पूछेंगे फिर से मुझे कि date और time फिर से बताइए, so I'm sharing that. So please take a screenshot. Okay. And I would recommend joining the WhatsApp community for full moon meditation, so that we will remind you. ये सारी चीजें हम रिमाइंड भी करो जो मैं हमने अभी आपके साथ शेयर किया. ये आई विल रिमाइंड दैट आल्सो, एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट मे बी द पीडीएफ इन दिस कम्युनिटी, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन इन दिस एंटायर मंथ. तो वो भी मैं पोस्ट करूंगा, तो आप लोग रेफर भी कर पाएंगे बाद में भी. Okay, so that's it. If you have any question, you can type in chat and ask. Unfortunately, Google it's a YouTube live, so you can type your question and I can answer. Okay. मैंने जस्ट रिपीट किया है सुनील जी स्लाइड्स. सो नंबर 1, पूरा का पूरा, आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टू बी डन. सो एक्सरसाइज करना है रेगुलर, सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, फास्टिंग करना है रेगुलर, मेडिटेशन करना है, पैरों को पानी में डिप करके सॉल्ट वाटर,
वर्चुअसली हमें जीना है, रोज प्रेयर करना है, लाइट अ लैम्प एंड प्रे, सोल अफर्मेशन करिए, साथ में सेल्फ हीलिंग करिए और फ्रीक्वेंटली ओम चैंट करिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए. दैट्स इट. So if you do this, there are a lot of things already. It's a lot, particularly this part, living virtuously. It will take a lot of effort, but it will pay you a lot. मतलब ये जितना आप ये चीज प्रैक्टिस करोगे, जब आपके पास आएगा एनर्जी, that will be amazing. Okay. So in case any questions, I am here. आप chat में पूछ सकते हैं, will answer. Why should we divide our service in small installment during the month? Idea is frequently kare, not once in a month. If you can do more frequently and in a large quantity or large scale, well and good, fantastic. तो वो भी कर सकते हैं आप. But frequently करना बहुत जरूरी है. Okay. So इससे होता क्या है? That is what you are already written. So it activates your heart. Every time you serve, every time you donate, every time you do something good for other people, इससे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है फ्रीक्वेंटली. दैट्स व्हाई. हाउ मेनी टाइम्स पर आवर ओम, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट यू शुड डू इट फ्रीक्वेंटली. ओके. आप हर घंटे एक बार या 2 बार भी करोगे तो भी चलेगा, बट डू इट फ्रीक्वेंटली. ओके. देयर इज नो फिक्स नंबर कि कितनी बार ओम चैंट करना चाहिए. ओके, ग्रेट. Anything? Thank you so much. Always. Thank you. How do you meet where we are outside the house during the particular peak time? If it works, if the work is unaudible and there are a lot of people around. नहीं, you don't need to go outside. घर के बाहर आप जाए ऐसा जरूरी नहीं है. आप घर के अंदर ही मेडिटेट करिए, बट मेडिटेट जरूर करिए एट दैट टाइम, पीक टाइम पर. चलो 3 में से आप पहले और थर्ड वाले फुल मून में नहीं भी कर पाए, बट वैसाख वाला पीक टाइम पे ही करे और बिल्कुल मिस ना करे. नो मैटर कितना वर्क है, एज आई सेड, देयर इज नो कॉस्ट which is too expensive in order to be part of this ceremony. So it doesn't matter कितना बड़ा काम है, क्या है, whatever is happening in the world doesn't matter. You have to meditate. Can this be practiced on the full moon if we are in periods that day? On the day of Vesak, if you are, let's say, going through period, no worries. Just clean the sex chakra and do meditation. No worries. Clean sex chakra 200, 300 times and meditate. Can you do Om chanting mentally? Yes, you can do Om chanting mentally, but verbally is important. क्योंकि mentally जब chant करते effect is different. When you chant verbally, the effect is more of a vibration बढ़ता है हमारा, और used up energy और unwanted energy expel होता है. So verbally आवाज करते हुए करना is better. It cannot be. It doesn't need to be big, loud sound. It can be just like Om. Good enough. That way. Om. Nice. Okay, then can we meditate at any type of the day or the Vesak day in the group? No, Vesak day के दिन आप ग्रुप में कर सके तो अच्छा है. You have to meditate at the time or the peak is good. That is the most important part. Okay, तो peak time पे meditate करें. हो सके तो ग्रुप में ही करें, नहीं तो आप इंडिविजुअली करें. ऑनलाइन भी रहेगा. There will be online sessions also or online meditation also for the Vesak day. So don't worry, you can join from home as well. What if my income is not fixed? How to donate? Weekly, whenever you get money. If your income is not fixed, मतलब क्या है? Maybe you are a freelancer or a professional or an entrepreneur, in a way that you are a solo businessman, a business person. So what you can do is, whenever you get an order or you get a payment, you should donate them whenever you get. Are we having meditation now? No, we are not having meditation today. We'll be having meditation on 6th of April at the peak time, सुबह 10 बजे. उसका मैसेज आपको आ जाएगा. Can we meditate at any time of the day on the Vesak day in the group? You can meditate any time, but peak is important. That is what I'm saying. Peak time पे ही करे. आप साथ में और एक बार कर सकते हो कि हाँ, नो प्रॉब्लम. दूसरे बार भी कर सकते हो क्या? यस. पीक टाइम पे ही करे, लेकिन ग्रुप में पीक टाइम पर ऑनलाइन मेडिटेशन होगा.
Can we share YouTube links with others? Yeah, because I did not speak anything very specific connected with the healing. So actually, yeah, you can share this YouTube link. That was the idea. Because many people, बहुत सारे लोगों ने request किया कि can we have this recording on YouTube so that anybody can join. So that's fine. मे का टाइम क्या है? इस रात को 11:04 peak time. So you should be in meditation by around 10:40 or 10:50 p.m. Kindly share the link you have provided. Okay. Let me fetch that link. I'll share. Can we meditate at any time? Okay, 1 minute. Yeah. Can we meditate at any time of the day on the Vesak in the group? Yes, you can. रजनी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं आंसर कर चुका हूँ. यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. आप ग्रुप में कभी भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड इज पीक टाइम. पीक टाइम यानी 11 बज के इस बार 4 मिनट, सॉरी. Okay, repeat the type of energy. So the first full moon of Aries, the will energy. Full moon of Vesak, the wisdom or intelligence energy. और जो तीसरा full moon है, that is a full moon of Gemini, that is love energy. Okay, Stugan, if you feel sleepy by 11, then I can't help with that. You have to be awake. Sometimes there was meditation. I guess one time it was at 12, रात को 12 बज के certain time. You have to stay awake. See, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. देयर इज नो कॉस्ट, नो एफर्ट. आप कुछ भी कितना भी अच्छा कर रहोगे, कितनी भी कॉस्ट पे करनी पड़े जस्ट बी पार्ट ऑफ दैट ऑन दैट डे टू मेडिटेट, तो भी कम है. तो देन नींद कौन सी बड़ी बात है. स्लीप अर्ली, स्लीप इन आफ्टरनून, स्टे अवेक, ड्रिंक एक्स्ट्रा कॉफी. आई डोंट नो, आपको जो तरीका सही लगे, बट यू हैव टू स्टे अवेक. पीक टाइम पर अंकित आस्किंग, पीक टाइम पर टीएचएम का साइलेंस पीरियड होना चाहिए ना. यस, इट शुड बी साइलेंस पीरियड. दैट्स व्हाई यू शुड स्टार्ट 15 मिनट्स बिफोर अप्रोक्सीमेटली, एंड देन साइलेंस थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दो. दैट्स इट. Can you please repeat the type of energy I explained? So this is done. Twin hearts meditation कर सकते? Yeah, you can do twin hearts meditation. Can we do forgiveness as a part of preparation? Yes, you can. Forgiveness can be part of preparation. Yes. Okay. So thank you, everyone. It was good. Yes, Saraji. It was once 3 a.m. Last time I guess it was 4 a.m. or something. So it's interesting time sometimes. But luckily it is still good time. 11 baje. Somebody was asking me, why Lord Buddha comes in US time zone. So it's not a US time zone. Actually, जब हम लोग, it's a peak time. तो जब maximum light will be redirected, reflected from the moon to the earth, तो वो जो peak time होता है, तो वो पूरे globe के लिए एक ही है. That's why it's based on calculations. Atma Namaste, everyone. Thank you so much for joining. Let's do quick closing prayer. So to the Lord God, Supreme God, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, we thank you for your blessings. Thank you for blessing us with divine light, love, and power, with guidance, with help and protection. Thank you in full faith. Thank you. Take a deep breath, hold, and exhale. Okay. Thank you, everyone. Thank you. What is the silence period? Silence period is when you meditate. एक टाइम पर आप एक्टिवली ब्लेस करते हो, सो देयर इज एक्टिविटी हैपनिंग, यू आर ब्लेसिंग पीपल. जब आप शांत हो जाते हो, when you just focus on the light on the top of the head. So I would recommend, Rashi, you can just join one of our meditations. जो उस दिन भी होंगे साइलेंस पीरियड, तो आपको ऑटोमेटिकली टाइमिंग भी पता रहेगा कितने बजे शुरू होगा, साइलेंस भी एडजस्ट हो जाएगा. ओके, सो डोंट वरी if you are new to the Twin Hearts meditation. Okay, thank you, everyone. So I'll be ending this live stream.
एंड रिकॉर्डिंग में ये पार्ट नहीं रहेगा, आई विल बी इरेजिंग दैट मच पार्ट, सो बिकॉज इट्स नॉट नीडेड फॉर द अदर पीपल, आई गेस. ओके. Just one more thing. Now you are on the YouTube. So if you want कि आपको फिर से आने वाले हमारे लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आए, तो देर इज अ सब्सक्राइब बटन ऑन द यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब करें सो दैट जब भी हम लाइव जाएंगे या कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा. सो वहाँ पे बेल आइकन है सब्सक्राइब के बाद में, दैट प्रेस दैट ऑल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू.